dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, namaskara, a very good evening to all of you. Thank you very much for taking out your time and being here. Wishing you all a very happy Mahashivratri. आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं. Today is also Women's Day. So congratulations to all the women present in house. And a big news for Bangalore and Karnataka, Mrs. Sudha Murthy is nominated to the upper house, that is Rajya Sabha. खुशी तो काफी हुई है सुधा मूर्ति जी की आप सबको. महिला दिवस भी है, महिलाओं को गैस सिलेंडर के 100 रुपये और सस्ता भी कर दिया गया है. सुधा मूर्ति जी को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट भी कर दिया है और नारी शक्ति वंदन बिल पास होने के बाद 33% रिजर्वेशन विधानसभा और लोकसभा पार्लियामेंट के लिए भी महिलाओं को दे दिया गया है. I could see men putting their hands together for women. That's a good sign. Well done. अच्छा लगा देख के. We have Mr. Ashwath Narayan ji also, Mohandas Pai ji and other dignitaries in the house as well. So I won't take more time. It's a, I think, very long presentation, but let me run you through this. Viksit Bharat, some light has been thrown by my dear friend. What Viksit Bharat is, what Viksit Bharat Ambassador means. But if you look at India today, we have to talk from sports to space, science to startups. It is India's decade. And if you look at all these Asian Games to others, I'll come on that. I'll come back on all those achievements. These are the few areas which talks about India's achievement from one sector to another. वैसे यादाश्त तो सबकी अच्छी होती है, लेकिन 10 साल बहुत लंबा समय होता है. Well, in 2013-14, when UPA was in power, it was their 10th year. India was among the fragile 5 economies of the world. There were one after another corruption cases from 2G, 3G, 2G, CWG to the coal scam to the Antriksh Devas scam, one after another. What happened in 2014 was we went to the public and we said, we are offering you a leader who has got credibility, who has proven his worth in the state of Gujarat, who is clean and pro-development, pro-technology. Give him an opportunity. We'll give you transparent and accountable government. We'll give you a clean governance. And today, after 10 years, I can proudly say, in last 10 years, nobody could raise a finger towards Modi or his government. He has provided a corruption-free government for the last 10 years. And we are pledging ourselves for the coming years also that we'll keep providing the corruption-free government. I think technology, which you understand better than me, how technology can play a very, very important role and how it has transformed the lives of a common citizen to the central government. If we look at pre-2014, there were scams after scams, but there were also money being siphoned off from the government schemes. And Rajiv Gandhi once said that he sent 100 rupees, only 15 reaches. Today I can say if we send 100 rupees through the DBT, 100 reaches the account, not even 1 penny is being siphoned off. That is the kind of transparency we have brought in. So, in 2014, from fragile 5 to the 5th largest economy in the world today, where we are. And one after another report says that India is the bright spot in the world economy. And if you look at the IMF report, to the Moody's report, to the other reports, it says that India is the fastest growing economy among the large economies of the world. And India is bound to grow in the next 2 or 3 decades. Growth trajectory, I'll talk about that also. Well, in 2004 to 2014, there were high inflation rates, of more than 10%,
high depreciation of currency, high current account deficit, high foreign debt. And reason was scams, policy paralysis, lack of political will, economic failures. And that led to the ratings degradation, FDI decreased, exports reduced. And if you look at today, the chart on your right hand side, GDP growth has gone up from 4.5% to 8.4%. Inflation has come down from 12.1% to 6.7%. The average inflation in last 10 years is 4.8%. Whereas during the UPA time, it was in 2 digits. FDI has gone up from 36 billion to 85 billion, and export is more than double from 300 billion to 770 billion. Forex reserves have gone approximately 2.5 times from 270 billion to 600 billion dollars. And our CAD current account deficit has come down from 5.1% to less than 2%. And if you look at the environmental approval for any business to start or expand, the environment approval used to take 640 days, almost 2 years. Now it takes only 103 days. We are trying with each passing day to cut it further down. And if you have to look at the compliance burden, it used to be 63 compliances required across sectors. It has come down to 23,000 today. And we are still working on it to take it to reduce it with each passing day. Look at this figure going up, how from 2002, India has gone up from 10th largest to the 5th largest. So in 2024, if we are the 5th largest, by 2027, we are bound to be the 3rd largest economy of the world. How we did it? We have ensured the last mile delivery. We have brought in economic reforms with the Digital India, where a lot of people raise questions, especially the opposition party. वैसे कुछ नेता ऐसे भी हैं जो आज भी मीडिया वाले उनको युवा ही कहते हैं, लेकिन सोच उनकी युवा नहीं हुई, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करने की इच्छा नहीं होती है. डिजिटल इंडिया पे वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते थे, लेकिन आज डिजिटल इंडिया के कारण क्या बदलाव आया वो मैं आपको आगे बताऊंगा. गति शक्ति ने सही मायने में हमारे आधारभूत ढांचे को गति दी है. यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन नो, मेक इन इंडिया टू अदर्स. आई विल कम ऑन ऑल दीज पॉइंट्स वन बाय वन. इफ यू लुक एट दिस वेलफेयर स्टेट, अंत्योदय, दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे हमें पंक्ति के अंत में खड़े व्यक्ति के लिए काम करना है. वी हैव टू एंश्योर द डिलीवरी टू द लास्ट माइल, and we have ensured that today. We have banked the unbanked through the PM Jan Dhan Yojana. We have funded, we have given loans to more than 34 crore people without taking the collateral or the guarantee from them. About 27 lakh crore rupees have been given to them. Public distribution system has been strengthened by the use of technology with the DBT. We have trying to skill the unskilled with the Skill India mission. We are supporting every farmer from the bees to bazaar, one nation, one market, that the ENAM, E-National Agriculture Marketplace, to the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. If you look at this, how it has impacted, more than 100 million LPG gas cylinders are given to those who didn't have the facility earlier, and it is given free of cost. We have made close to 12 crore toilets. We have also provided water connection to more than 14 crore households under the Jal Jeevan mission. Every second there is a new tap connection given in the country today. We have provided 40 million new houses to those who didn't have the house. And how it has impacted those people who have to spend a lot of time and energy gathering the wood to have the fuel or to cook food, and to bring water also from the well or from the river, spend a lot of time going to the field for open defecation, and they were suffering because of this health crisis. They didn't have enough money, they have to take loan for that, and actually becoming BPL, all because of these reasons. Now when they have this facility, the life has changed.
And for how many people the life have changed? People like you, when you pay taxes, and if every penny is spent wisely, the life has changed. For 40 million new houses are made, 120 million toilets are made, more than 100 million LPG cylinders are given, 140 tap connections are given, 600 million people are getting 5 lakh rupees free insurance cover the health facility, 800 million people are getting free food grains. We have given 2.2 billion vaccines administered during the COVID-19 pandemic. One after another figure I can give you how the life has changed because you have paid the taxes honestly and our government has spent every penny for the benefit of the poor and for the growth of the country. हमने पाई बचाई भी, गरीब की भलाई के लिए लगाई भी और आगे भी लगाने वाले हैं. If you look at this welfare, now you might have heard these slogans, not the 25 years old, the 30 or the 21 years old, but इससे पहले की जनरेशन ने जरूर सुना होगा, नेहरू जी के समय से लेके सोनिया जी और राहुल गांधी जी के समय तक. ये कहते थे गरीबी हटाओ, गरीब, 4 पीढ़ियों ने कहा है इनकी, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ. गरीब मिट गया लेकिन गरीबी नहीं हटी. But how good policies and good implementation can transform. This is the motto. 25 crore Indians, 250 million Indians have come out of the multi-dimensional poverty line. And how it is going to help people like you. होता क्या है, अगर हमारे गरीबी रेखा से बाहर आए तो हमारा आपने घर बना के दिया, अनाज दिया, मुफ्त में बाकी सुविधाएं दी, तो गरीब का पैसा बचता है. When you save that money, that means your spending power has increased. When you go to spend that in the market, that gives boom to the production facility, that creates the demand, increase the production facility, increase the services industry, and that is how more jobs are created, economy becomes bigger and better. That is how the size and scales get better and better. And with 25 crore people coming out of the multidimensional poverty line, is actually creating more job opportunities, creating more startups in the country and helping us. If you look back in 2014, out of 12 public sector banks, 11 were under the PCA framework. With this 4R strategy, today 12 out of 12 public sector banks are profit-making banks. In 2013-14, they were making only 11,000 crore rupees profit. Today they are making more than 1 lakh crore rupees profit today. सरकारी बैंक आज मुनाफा कमा रहे हैं. In 2014 to 2024, in last 9 years, more than 10 lakh crore rupees have been recovered from the NPA accounts. HDFC have become the 4th largest bank of the world. And if you look at this slide, from 14.6% gross NPA ratio in March 2018, it has come to 3.9%. That is how this 4R strategy has worked and how our banks have become profitable. From 4.5 lakh crore rupees to 10.7 lakh crore rupees is the market cap of our public sector banks today. तो ईमानदारी से काम करो तो किसी भी क्षेत्र में अच्छा किया जा सकता है. How the economic reforms are fueling growth. We have streamlined the business proposals to the removal of the archaic clause. मैंने जो आपको पहले कहा कि 63,000 compliances थे, कम करके 23,000 हो गए. पुराने अंग्रेजों के समय के 1,562 laws have been repealed. Apart than that, I'll give you one example from my ministry only. We have brought in the press and registration of periodicals bill. Earlier, if you have to register your press or periodicals, it used to take 2 years' time to go from DM to the RNI level. Today, we have made it simple and simultaneous. You have to apply online, and within 2 months' time, after 60 days, you will get your title, verification, and also your license to run your press or periodical. That is how Modi government is working today. From 2 years' time to 2 months' time, it has come down.
And we are trying to work on other areas also. With the Jan Vishwas Act, we have reduced the compliances for people and businesses. 183 provisions were decriminalized in 42 central acts, and also the construction permit ranking improved from 184th to 27th in 2019. Getting electricity ranking has improved from 137 to 22 in the first 5 years of Modi government. India ranks 13th in the protecting minority investors and 25th in getting credit. This has all happened in the last 10 years. We have decriminalized the laws. अब छोटी छोटी गलती के लिए भी आपको जेल नहीं जाना पड़ता, ये हमने इंश्योर किया है. Indian startup ecosystem has become better and better, as rightly mentioned by Mr. Jain. From 500 startups in 2014 to 1,20,000 startups today, and having 110 unicorns. मुझे आज भी याद है, मैं जब MOS फाइनेंस बना तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बुलाकर कहा, we have to help the startups, we have to cut down their compliance burden, factory inspection, when the takeover happens, what should be done, their income tax burden should be cut down. One after another changes need to be done, we should help them. He believed in the youth of India, and the youth has actually delivered in the last 10 years, making India the third largest startup ecosystem in the world. And this is the picture in front of me. Sitting here, what you are doing this. मैं जब बैंगलोर 1992 में पहली बार आया था इंडिया अंडर 19 का कैंप लगाने में, 17 साल का था. तब बैंगलोर में मुझे MG रोड और ब्रिगेड रोड यही नज़र आते थे. ये आसपास क्यूबन पार्क से लेके विधानसभा, यहीं पे हम ट्रेनिंग करते करते स्टेडियम से यहीं पे आते जाते थे. लेकिन आज बैंगलोर को देखो तो लगता है कमाल हो गया. जैसे कांग्रेस के समय इकोनॉमी क्रॉल करती थी, आज आपका ट्रैफिक बैंगलोर का वैसा करता है. लेकिन उस समय इकोनॉमी तो बिल्कुल स्टैंड स्टिल की तरह थी. यहाँ तो चलो क्रॉल करता, तो इसका मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतनी आ गई कि यहाँ पे लोगों ने बहुत निवेश किया, बहुत लोग आके बस गए. लेकिन विद द चेंज ऑफ टाइम वी नीड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स टुडे वी हैव, नॉट इन द कंट्री बट इन द वर्ल्ड टुडे, इज द कैंपागोड़ा एयरपोर्ट. आई थिंक one after another. If you look at the startups, they are not confined to metro cities only. Majority of them are coming from the tier 2, tier 3 city or from the rural areas now. And we have seen from the agriculture sector also, from space tech to the agri-tech, we have seen lot of startups coming up, more than 160 space sector startups. Hyderabad based startup Skyroot Aerospace launched the private sector Dr. Vikram S. 7,000 plus agri and allied startups we have. 100% FDI in space sector will promote new startups soon. They have raised about $141 billion in the last few years, and combined valuation of Indian startups stands at $450 billion today. That's a big, big achievement of the youth of this country. Well done. We are so proud of you, and I'm sure you're gonna take it to the next level. If you look at the formalization of the Indian economy, this chart throws a light on that. कैसे डिजिटलाइजेशन ने हमें मदद की है. आइडेंटिटी डिजिटलाइजेशन के लिए आधार आ गया, सब्सिडी खाते में पहुंचाने के लिए डीबीटी आ गया, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए जेम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आ गया, जहां पर छोटे से छोटा व्यापारी भी अपना सामान सरकार को बेच सकता है. टोल बूथ पर आपका समय 743 मिनट लगता था, अब कुछ सेकंड तक, 743 सेकंड लगता था, आज कुछ सेकंड तक रह गया है. फार्म मार्केट डिजिटलाइजेशन के लिए ई-नैम, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेस, वो बना दिया. MSME डिजिटलाइजेशन के लिए हमने उद्यम पोर्टल बना दिया. ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट का पता नहीं चलता था कितनी फॉर्मल है कितनी इनफॉर्मल सेक्टर में है. तो 6.43 करोड़ न्यू EPFO रजिस्ट्रेशन लास्ट 7 साल में हुए, अपने आप में दिखाता है कि कितना बड़ा आंकड़ा फॉर्मल सेक्टर में जुड़ा है. ई-श्रम फॉर्मलाइजेज द इनफॉर्मल, 29 करोड़ ई-श्रम कार्ड्स इशूड.
लेबर कोड हमने बना दिया, 4 न्यू लेबर लॉज इंट्रोड्यूस्ड। इसी तरह से स्वनिधि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए about 7 million street vendors are benefited out of this. They got 10,000 rupees per head, but now they have qualified after making the digital payments to 20,000 to 50,000 rupees loan without giving any collateral or any security. You won't believe they are doing wonders today. उनमें से कई लखपति बन गए जिनके पास कल तक 10,000 रुपये की कैपिटल नहीं थी। 10,000 रुपये उन्होंने एक साल में कितनी बार उसको घुमाया होगा, जिसके कारण आज वो लखपति बने हैं। टाइमली पेमेंट की, डिजिटल पेमेंट की अपने आप में दिखाता है। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एक बहुत बड़ी ताकत थी। स्टैंड अप इंडिया से SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बल मिला। सेल्फ हेल्प ग्रुप को हमने कहा था कि हम इनको लखपति दीदी बनाएंगे, एंड आई एम प्राउड टू से इन जस्ट 2 years स्पैन वी हैव मेड 1 crore सेल्फ हेल्प ग्रुप दीदीज एज लखपति दीदीज. In next 5 years, we'll make another 2 crore women as Lakhpati Didi in the country. One after another, I can go on with the Mudra Yojana. I had told earlier also how this has helped. The GDP growth rate skyrocketed up to 8.4% in the Q3 in the financial year 2023-2024. Construction surged by 9.5%. Manufacturing surged by 11.6%. If you look at the Jeffrey's report of the Indian economy stride, how it has gone up, it throws light on that. India GDP hits 3.6 trillion and expected to be 5 trillion in 2027, and we're soon gonna be 10 trillion after a few years as well. GST, when we brought in 2017, many people said, economists to the politicians, told Modi ji, please don't bring in GST, because if you look at most of the example across the world, anyone who has brought the GST has lost power. Because to implement it and stabilize, it takes time. Modi took risk in the interest of the country. For him, industry was the priority, country was the priority. We have implemented it successfully. If you look at pro-COVID, we used to collect 90,000 crore rupees as the GST. Today, the average collection is 1,66,000 crore rupees per month. That is how honestly the people have paid taxes and how our tax collection has increased. Now, earlier it was in the double digit, the extreme poverty. It has come down to 3% in India. Well, the former finance minister raised a lot of queries on the digital India, and so on with the Congress leaders, they did so. If you look at this slide, what digital India means today. We had the Arogya Setu app, COVID app, we have the digital certificate of the COVID vaccination. At the same time, as I said, FASTag has reduced the time from 700 plus seconds to 47 seconds. We have digitized the land parcel for more than 80 million land parcels under the PM Swamitva Yojana. We have close to 114 crore mobile connections, 34 crore RuPay card, 6 crore plus application verified under the National Scholarship Scheme, and so on. MyGov has more than 4 crore users, and so on. We have a lot of CSC centers, around 6 lakh CSC centers across the country. If you look at the Digital India, all I want to say by summing up is, चिदम्बरम जी कहते थे गरीब आदमी क्या करेगा, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होगा, पैसा कैसे देगा। आज सबसे ज़्यादा उपयोग और भला किसी का हो रहा है तो गरीब का हो रहा है, स्टार्टअप्स का हो रहा है, और दुनिया भर में जितनी डिजिटल पेमेंट्स की जाती है, द इंडियन शेयर इन द वर्ल्ड्स डिजिटल पेमेंट इज 46% टुडे. So we have proved them wrong. The common man has proved them wrong. And Gati Shakti speaks about at the size and scale what we have achieved in the last few years. And Gati Shakti has actually helped. More than 5 times increase in the overall expenditure. This year we have kept the budget at 11,11,111 crore rupees for the capital expenditure. Massive expansion in the metro connectivity. Earlier it was in 5 cities, now it is in 20 cities.
If I have to give you numbers of the natural gas pipeline operation, it has 23,000 kilometer plus today, 12,500 kilometers road completed under the Bharatmala Pariyojana, 91 kilometers per day rural roads are made, and 43 kilometers per day are the highways being made. If you look at the comparative data from 2014 to 2024, in 2014 we had 74 airports. Today we have 150 airports. In 2014 we have 3,20,000 kilometers of rural roads. We have added new 3,75,000 kilometers rural roads in last 10 years. In 2014 we have 96,000 kilometers of national highway. Today we have 1,50,000 kilometers of national highway. In 2014 we have metros in 5 cities. Today we have in 20 cities. In 2014 we have 380 medical colleges. Today we have 700 plus medical colleges. In 2014 we had 400 plus universities. Today we have 1100 universities. In 2014 we had 7 AIIMS. Today we have 23 AIIMS hospital. In 2014 we have 16 IIT. We have 23. In 2014 we have 12 IIMs. Today we have 19. If you look at this comparative data, we have achieved much more in 10 years what the previous government did in 60 years. That is the size and scale we are achieving today, and I can assure you in the next 5 years it's going to be much bigger and larger. So PM Gati Shakti is actually helping us with that. I wanted to explain it to you, but it will take more time. All I'm trying to say is, today we take less time to start a project and complete a project. Earlier, the project with what Mr. Nehru started, even Manmohan Singh could not complete that. What project we have started today, we are completing in our term only. That is the difference in the previous government and today's government. 50 साल पुराने सिंचाई प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट, डबल प्रोजेक्ट ऊपर गाड़ी और नीचे रेल भागने पूरे नहीं होते थे, आज देश में हमने किए हैं. एक बड़ा बदलाव मैं आपको बताना चाहता हूं. आज हम बड़ा सोचने की क्षमता रखते हैं. पहले हम सुनते थे दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां पर है, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को कहते थे. आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को कहते हैं. पहले कहते थे दुनिया का सबसे बड़ा पुल कहां पर है, कहीं और होता होगा. आज हमारे जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर रेलवे का पुल बना है. पहले कहते थे सबसे लंबी सुरंग सबसे ऊंचाई पर कहां है, आज अटल टनल मेरे मनाली में वहां पर है. पहले कहते थे दुनिया का सबसे ऊंचा हाईवे कहां है, आज हमारे भारत में है. दुनिया का सबसे लंबा रेल नेटवर्क कहां पर है. आज हम ये क्षमता रखते हैं कहने की कि दुनिया का सबसे बड़ा सुंदर और सब करने का काम आज भारत वो सोच रख रहा है. ये सोच बदली है हमने पिछले 10 सालों में. पहले दुनिया के नेताओं के सामने आंखें झुकाकर पहले की लीडरशिप बात करती थी. आज आंखों में आंखें डालकर कंधे से कंधा मिलाकर भारत काम करता है. यह नए भारत की बुलंद तस्वीर है, ये हमने बदलने का काम किया है. सो हाउ फास्ट इज इंडिया बिल्डिंग? फास्टर देन एवर. दिस स्लाइड शोज. आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ग्रोथ रीचिंग India's last mile. This slide shows everything. Then I'll go to the next one. Look at this. This is what I was talking about, the Mumbai-Delhi Expressway. कहाँ कितने दिन लगते थे, आज 24 घंटे के अंदर आप दिल्ली से मुंबई पहुंच जाओगे. वंदे भारत मेक इन इंडिया है, बेंगलुरु से भी चली है. और बड़ी बात ये, बेंगलुरु में बाद में चली, मेरे हिमाचल से पहले चौथी ट्रेन चल पड़ी थी ऊना से. आज ये नहीं होता कि सब कुछ बड़े शहर को मिलना है. आज देश के हर क्षेत्र का विकास हो रहा है. इफ यू लुक एट दिस कारगिल जंस्कार रोड, ये बर्फ में बंद हो जाता था. अब कश्मीर से कन्याकुमारी जोड़ने के लिए हमने पूरा कर दिया है. मनाली से तो हमने कन्याकुमारी को जोड़ ही दिया, अब कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ने का काम भी हम लोग कर रहे हैं. ये एक के बाद दूसरा. जी हाँ, हमारे ये 73 वर्ष के प्रधानमंत्री हैं जो फाइटर जेट भी उड़ाते हैं और डीप सी डाइविंग भी करते हैं. ये टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करते हैं और जिनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर दुनिया भर के देशों में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब पर है. और पिछले 4 सालों में दुनिया की लोकप्रियता अगर नेताओं की देखी जाए तो सबसे लोकप्रिय नेता किसी और देश का नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं. PLI scheme, let me talk
take couple of minutes on PLI scheme. We started PLI scheme with the mobile manufacturing. 6 years back, we were the second largest importer of the mobile phones. Today, we have become the second largest manufacturer of the mobile phones. लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हमने मोबाइल्स कर दिए पिछले साल हिंदुस्तान से. ये बदलाव है. और अगर आप आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, पहले इसमें भी बात करूं, हमारी कॉटेज इंडस्ट्री को 300% इंक्रीज, 3 टाइम्स इंक्रीज हमने इसमें की है. खाद्य इंडस्ट्री हमारी कहाँ 30,000 करोड़ की होती थी विलेज इंडस्ट्री, आज वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की हो गई है. एमएसएमई का हमने रिवाइवल किया है. 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से दिया. कॉर्पोरेट टैक्स हमने अक्टूबर 2020 में कम किया था, 25% से कम करके 15% कर दिया. आज वर्ल्ड में सबसे बेहतर अगर कॉर्पोरेट टैक्स कहीं पे है तो हमारे भारत में भी है. कंपनीज एक्ट में हमने डीक्रिमिनलाइज करने का काम किया, जिससे लोगों को अब जेल नहीं जाना पड़ता, बचते हैं. अगर आप इस पर देखेंगे अगली स्लाइड पर, तो हमारी जीडी में 30% कंट्रीब्यूशन हमारे एमएसएमई की है और हमारे टोटल एक्सपोर्ट का 50% हमारे एमएसएमईज कर रहे हैं. 99% हमारे मोबाइल फ़ोन की शिपमेंट भारत से 2023 में हुई. अब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम कर पा रहे हैं. इसी तरह से अगर आप खिलौना का देखेंगे, टॉयज़ वी हैड 239% ग्रोथ. आत्मनिर्भर भारत केवल एक स्लोगन नहीं है, एक सोच है. और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम पहले इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आए हैं. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम 6 बिलियन एक्सपोर्ट करते थे, आज 24 बिलियन करते हैं. हम मैरीन एक्सपोर्ट्स 5.5 बिलियन करते थे, आज 8 बिलियन करते हैं. इसी तरह से टॉयज एक्सपोर्ट 96 मिलियन से बढ़कर 326 मिलियन हुए हैं. इंडिया हैज़ बिकम द 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, 2nd लार्जेस्ट स्टील and the largest in the agriculture and the dairy segment. One after another segment we are doing well. Boeing and Airbus has set up their manufacturing plants here. India has placed order for more than 1,000 aircraft, commercial aircrafts, the largest order in the world, biggest order in the world. Not only that, we also have the maximum number of women pilots in the world today. तो वुमेंस डे पे मैं आज इतना कहना चाहता हूँ, महिला पायलट्स दुनिया में सबसे ज़्यादा आज भारत में हैं. जो हमारे ग्लोबल लीडर्स यहाँ पर आए, उसका एक उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है. फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, ये गंगा आरती करते हुए दिख रहे हैं. हमारा जो इंडियन नेवी का इंसिग्निया है, वो छत्रपति शिवाजी के सील से उससे प्रभावित है, उससे प्रेरणा हमें देता है. हमारे स्टोलन आर्टिक्राफ्ट जो सैकड़ों की तादाद में बाहर थे, आज वो दुनिया भारत को वापस कर रही है. अब ये वापस आए, शायद वो दिन भी दूर नहीं होगा जब कोहिनूर भी वापस आएगा. क्योंकि अगर अंबेडकर जी का जहाँ पर दीक्षा हुई, शिक्षा हुई, जहाँ जाके उन्होंने काम किया, हमने वहाँ पर पंच तीर्थ भी बनाया है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव कम टू दिल्ली रिसेंटली? Well, during the Congress time, which used to be called Rajpath, it has converted into a beautiful Kartavya Path, which used to have the King George Pancham statue on the India Gate. Today we have Netaji Subhash Chandra Bose statue installed. We have the world's largest, tallest statue, Sardar Patel statue. And if you look at on the other side, the Ambedkar's 5 such places of significance from Janam Bhumi, Diksha Bhumi to the Shiksha Bhumi and Chaitya Bhumi as well, which are converted into the museum and places of for people to go and visit these places. Women-led development, the paid maternity leave have enhanced from 12 weeks to 26 weeks, highest in the world. दुनिया में कहीं 26 हफ्ते छुट्टी नहीं मिलती है, भारत में मिलती है. ट्रिपल तलाक से बहुत दुखी थी मुस्लिम महिलाएं, उनसे निजात दिलाने का काम भी किया है. 31 करोड़ मुद्रा लोन देने का काम महिलाओं को किया है. तो वहीं पर उनको अपनी आय के साधन खड़े हुए, तो मैटरनिटी रेट जो है वो भी हमारा एमएमआर कम होकर 130 से 97 आया. हम इसको और कम कर रहे हैं.
जितने पक्के मकान बने हैं उसमें से लगभग 3 करोड़ मकान सीधे महिलाओं के नाम पे, अब उनको कोई बाहर नहीं निकाल सकता, मालिकाना हक महिलाओं के पास है। इसी तरह से 311 ITIs वुमेन के लिए एक्सक्लूसिवली बनाई गई है और अब तो जेंडर इक्वालिटी में भारत दुनिया के टॉप देशों में 12.4% पर है। वुमेन पायलट्स जो हमारे हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं और 10 करोड़ महिलाओं को हमने जहां एक और एम्पावर किया उज्ज्वला योजना से, वहीं पर 33% रिजर्वेशन इन द विधानसभा एंड लोकसभा is given to the women now. I look forward to see most of you in the Vidhan Sabha, Lok Sabha or the other forms of the democracy in the coming years. जहाँ तक DBT की बात, मैं ऑनेस्टी इन गवर्नेंस की बात करना चाहता हूँ। थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, मैं क्वेश्चन ज़्यादा लेना चाहता था, मैं एक दो स्लाइड्स के बाद ख़त्म कर दूँगा। अगर आप देखेंगे तो फेक बेनिफिशरीज थे 4.2 करोड़, राशन कार्ड नकली थे एंड 4.1 करोड़ गैस कनेक्शन नकली थे जिनको सब्सिडी मिलती थी, हमने वो ख़त्म कर दिए और उससे हमें 2,70,000 करोड़ रुपया बचा है। 2,73,000 करोड़ रुपये हमारे बचत हुई है। जेम पोर्टल से ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट सरकार ने शुरू की, जहां छोटे से छोटा वेंडर भी अपना सामान बेच सकता है। फाइट अगेंस्ट करप्शन में हमने जो हमारी क्लास बी, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की जो जॉब्स थी, अब उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, उस पर इंटरव्यू ख़त्म कर दिए हैं, मेरिट वाले को नौकरी मिल जाएगी, करप्शन उसमें बिल्कुल ख़त्म है। पहले आपको नोटरी से अटेस्ट कराना पड़ता था, सर्टिफाई कराना पड़ता था, अब सेल्फ सर्टिफिकेशन अलाउ कर दिया, वो भी पैसा और आपका समय बचता है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल हम लेकर आए हैं, जो पुराने लोग पैसा लेके विदेश भाग गए थे उनको बाहर लाने के लिए हमने बनाया है। खेलों में भारत कहीं दिखता नहीं था, केवल क्रिकेट दिखता था और मैंने भी धर्मशाला का स्टेडियम बनाने से लेकर BCCI के प्रेसिडेंट तक बहुत साल उसी में बिताए। अब देश का खेल मंत्री होने के नाते इतना जरूर कहना चाहता हूँ, वी हैव प्रोग्रेस्ड वेल इन द लास्ट फ्यू ईयर्स विद द खेलो इंडिया इनिशिएटिव टू द फिट इंडिया इनिशिएटिव, where we are taking care of the boarding, lodging and the training facilities for the players. The budget has increased 3 times. We are providing them free of cost training and 6 lakh rupees out of pocket allowance to the elite athletes, 6,20,000 rupees to the 3,000 athletes who are training in various parts of the country. We have started 23 National Center of Excellences, 69 site training centers, and just in 1 year span, we have built 1,072 Khelo India centers across the country where the former champion athletes are hired to give training. So we have given them the employment as well as the training facility for them to train lakhs of youth athletes in the coming years. If you look at this slide, ये नीचे जो बच्ची आपको दिखती है ये जम्मू कश्मीर से है, पैरा एथलीट, शूटर, शीतल देवी। शी इज जस्ट 17 ईयर्स और 17 साल में इसने हमें 2-2 मेडल जिताने का काम किया है भारत के लिए। और इसको शुरुआत किए केवल 1.5 साल हुआ है, केवल 1.5 साल। दुनिया की पहली फीमेल आर्मलेस आर्चर है। और देखिए कैसे आर्चरी, आप अगर बो एरो लेके खड़े होंगे तो आपसे भी निशाना ठीक नहीं लगेगा, इसके पास तो दोनों बाजू ही नहीं है। हमने क्या अचीव किया है? In Tokyo Olympics, we have won 7 medals, Paralympics 19, Deaf Olympics 20, Commonwealth Games 61 medals, Thomas Cup we never won, we won the gold medal. Asian Games, our women team won the champion in the badminton, and in the Asian Games, we have won 107 medals. First time we scored the century in the Asian Games, and Para-Asian Games, 111 medals. In the World University Games, the total number of medals India won in the last so many years, this time we have won more medals than that, 26 medals. So we are doing well, better than the previous years, but still there is a miles to go, if I have to say, if we have to go to the top, reach the first 5 positions in the world. So I request all of you, create sports infrastructure, help. You can be part of the National Sports Development Fund if you want to be. You can adopt an athlete, you can adopt a game, you can create an infrastructure. That's what you can do and help us to create better infrastructure.
सवाल आप पूछना चाहते हैं, मैं चाहूँगा आप कुछ सवाल पूछें, मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।